Hello everyone, this question appears in class 7th NCERT chapter of perimeter and area. This is fourth question of its exercise 11.3. So the question says that a gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. Find the length of the rope he needs to purchase. If he makes 2 rounds of fence, also find the cost of the rope if it costs rupees 4 per meter. सो हमारे पास एक सर्कुलर गार्डन है, इसका डायमीटर है 21 मीटर. सो टी इज इक्वल टू 21 मीटर. सो रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे. रेडियस हो जाएगी डायमीटर बाई 2. सो 21 बाई 2 इज इक्वल टू 10.5 मीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ रोप if he needs to purchase if he makes 2 round of fence. So fencing हम इसके चारों circumference पे करेंगे. So circumference of circle is equal to, इसका फॉर्मूला था 2 पाई आर, जाएगा 2 इंटू पाई की वजह से 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास है 10.5, डेसिमल टाइम अपॉन 10. 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम एंड 1 टाइम. 5 से 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो हो जाएगा सोल्व करने पर हमारे पास 66 मीटर. देन he makes 2 rounds of fence. So length of rope for fencing is equal to 2 round है. So 2 into circumference जो हमने फाइंड आउट कर लिए 66 से हो जाएगा 132 मीटर. देन हमें फाइंड आउट करना है इफ फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप if it costs rupees 4 per meter. So cost of rope for 1 meter is equal to हमें given है 4 rupees. So cost of rope for 132 meter is equal to 132 into 4 से हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 and 4 1 जा 4, 528 rupees. So cost of rope is 528 and length of rope needs for fencing is 132 meter. Thank you.